हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते होंगे कि आज मैं सारा जो सरस्वती हैं, जिन्होंने घर वापसी की है, और लास्ट टाइम मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो आज वो मेरे साथ हैं और हम नो हिजाब मूवमेंट जो ईरान में चल रहा है। ईरान में बहुत कुछ होता है, आप लोगों को पता है, जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा महिलाएं परेशान हैं, तो इन्होंने अभी स्टार्ट किया था नो हिजाब मूवमेंट। तो इनको हिजाब से निजात, मतलब इनको हिजाब नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर ये लोग ने मूवमेंट चालू किया है। तो मैं सारा जी से अब आपको मिलवाऊंगी, और आपने पहले भी देखा होगा, सारा जी आई थी मेरे चैनल पर, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा जब वो ईरान में थी। इट्स लाइक नो प्लेस फॉर वुमेन, उस टाइप का एक माहौल है। और आज हम उनसे बात करेंगे, तो आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए, और प्लीज आप लोग जुड़ जाएं ताकि हम सारा से बात करें। और भी कई बातें हैं जो ईरान की है जो हम बात करेंगे। ये एक ईरान से आई हुई महिला है जो इंडिया में अब रहती हैं, और इन्होंने घर वापसी भी कर ली है इंडिया में। इनको मैं आपसे मिलवाती हूँ, मैं इनको अपने स्ट्रीम पर लेती हूँ। जी नमस्ते सरस्वती। Namaste, namaste. How are you? How are you? Good? Yeah, you can hear me? Yes, I can hear you. You can hear me? Yes, yes. So Sara ji, I today we just wanted to discuss that this big moment जो हो रहा है ईरान में, especially no hijab moment. तो I wanted to talk about that कि ये जो एक moment जो चला है, what do you think that is happening in Iran, and women are coming out, बहुत सारी महिलाएं बाहर आ रही हैं कि उनको हिजाब नहीं पहनना है, they don't want to wear hijab, तो they are fighting for their rights. And so what do you think is happening over there? This movement very long time ago start, but now there are our women started make the campaign. Now, last 2 weeks before they start make campaign, and now everywhere, and anytime they remove the hijab. And but so many from the government side, so many people like army revolution attack to women and beat them and put in jail, but still we are continue, and this movement from around the, I'm not sure, but from 2009 till 2011 this movement started with hidden freedom of women, and they all take the picture, and we have the Facebook account, that stuff. Yeah. And but now everybody, mostly the young generation, they are started, and even the so many women with the hijab beside us, because they have the daughter, they have the other family, they don't have hijab. And before, we don't have any problem with anybody who wants wear anything, they can wear anything. But now our government make the some two side, the Hmm. Persian woman with Persian woman front of Hmm. each other. But before, this is not like that. That's our kingdom. And but now they are going very crazy, but still every day I check the Instagram, mostly they send in Instagram so many video coming, and the woman is standing from them. And I hope, I'm thinking some things happen, because I'm researching, mostly revolution happened in the world, mostly time with the woman, because woman always in the injustice, always, not only now in Muslim country, because they have a Muslim rule for 1400, but mostly country now they have democracy. Before, same, it's not different, and woman fighting. And I hope, I when I saw the news, um I have more hope, because if you compare with 10 years ago or 5 6 years ago, is different. Everything's hidden. We make the photo and send the different media, but hidden. But Hmm. now it's hidden. Out and open. Yeah.
Yes, exactly. Yeah. And it's very big difference, but we have the hard time because so many now women in jail, and so many of them very young. And I think Yes. so, like 1 month ago in Shiraz, the like teenage woman and boy, girls and boy, they make some campaign with, with oneself they are start, no any leader, and in very big park everybody come without hijab and very fashion, the Hmm. young generation very fashion, and they Hmm. come and very interesting, and they cannot do anything because they are, if they catch some of them, but this is they are teenage, Hmm. and it's very different issue, and now is very very big headache for the our government because they don't know now, if they are catch them and they hurt them is very big voice, Hmm. and I'm thinking everything is going to better, but Yeah. I don't know Positive. what's happening. Other side, you hearing about the war. They want Hmm. to start the war, and I don't know what's happened really. But in this part, we are, we saw our power, how much we have power with together, Yes. and it's very big difference. जी हाँ, तो ये कह रही हैं कि मतलब जहाँ पर ये कैंपेन इन लोगों ने शुरू किया क्योंकि जहाँ शिराज की ये जो बात कर रही है वो मेरा जो सरनेम था वो भी शिराजी था पहले बिफोर माय एंसेस्टर्स केम एंड यहाँ पर वो बस गए थे तो हम शिराज से ही हैं। तो ये बता रही है कि शिराज से एक टीनेजर लड़का लड़की ने ये कैंपेन शुरू किया और ये कैंपेन बहुत पॉजिटिवली जा रहा है। जिस तरीके से अगर आप वो देखेंगे, अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे या फिर आप अगर देखेंगे अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे और अगर आप फेसबुक पे देखेंगे तो ये कैंपेन काफी जोरों से जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, स्पेशली विमेन। मैं महिलाओं की बात करती हूँ जो बहुत ही फंसी हुई हैं इसमें। और हिजाब पहनना नहीं पहनना एक चॉइस होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती। और यहाँ पर बहुत जोर शोरों से ये कैंपेन लड़कियां अपना हिजाब उतार के फेंक रही हैं और उस तरीके के बहुत सारे फोटोज आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है वहाँ इस्लामिक लॉ जो चलता है वो बहुत ज्यादा ही क्रूअल है और बहुत ज्यादा वहां पर लड़कियों को फिर जेल में डाल दिया जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज हम देख रहे हैं कि हिजाब मूवमेंट आई थिंक इज कम एंड इट विल स्टे। ऐसा नहीं है कि पहले भी हुआ था हिजाब मूवमेंट, पहले भी हुआ था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन अब की लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज में बिलीव करती हैं कि हमको हिजाब नहीं पहनना है। देयर आर सच ब्यूटीफुल, एक तो ये इस्लाम में दिस इज थिंग टू कवर योर हेड इन इस्लाम, दैट इज वन प्रॉब्लम which has been forced on women. They are Yes. just forcing, yeah, they are forcing to wear hijab. I mean, this has to be a choice, not on force. I want to ask you, like, I am from Shiraz, I was from Shiraz. My grandfather and all of them were from there. I want to ask you one thing, Saraswati, that in the period when there was the Shah of Iran, when he was there, जब वो थे, when he was there, तो there was so much of there was so much of modern modern sort of a society. It was Yes, such yes. a nice society because I remember Shah of Iran, his wife and his kids, they all were so free and liberal minded. And all of a sudden जब Islamic law आया, जब Khomeini and all of those people when they entered into the scene, पूरा ईरान का जो वो है नक्शा ही उन्होंने बदल दिया। जिस तरीके से अफगानिस्तान में भी किया है इन्होंने, ये शरिया लॉ लेकर आए और वहां भी लेकर आए। सो व्हाट डू यू थिंक दैट these girls who go for who are removing the hijabs, are they getting punished for it? Yes, yes. We have very this this happened from the 5 6 years ago. One girls going and remove the hijab and put this scar on the stick and standing some very high, little bit high level of a street and showing and take the photo, and like it started, and like so many women they did, and after that they catch them, and they are very young,
and they give to them penalty for 5 years, 10 years, 13 years jail. Oh my And God. is, when she go out, she's finished already. Hmm. And now I don't know how much now they catch, because these days so many, but we have punishment. We are not punishment for death, but Yes. they give the so many long term jail, and is not good. And but always they catch us, and always they put us in jail. But before, because of we don't have any technology or like internet, nobody understand. We are 43 years we are fighting, because when the Khomeini came, we make that this is not our Iranian revolution, Persian revolution. We make revolution for the democracy. Yeah. But suddenly Khomeini came and took the power. But who gave this to the power? The other country with them. And Yeah. and after that, this revolution, because I saw so many documentary now they come up, that's time revolution happened, and Khomeini make the vote, and so many women and men come and asking, we don't want a Muslim government, and we don't know about the constitution. They didn't give to us constitution. Why we Hmm. go and give to Khomeini vote? Yeah. And the first years from 60 till 67, he killed so many people and put in the jail. I know. Yeah. And this is not our revolution. We don't want this, because Persian country is like open mind country. Always, mostly time in our kingdom, every religion, anybody has any belief, they are living together without any problem. Now they make even very interesting, they says that we are Muslim, the government, our government says Muslim, and already they are opposite of the Arab people, they are really Muslim. This Mhm. is like, this is like not right, because they are Muslim. Why you are fighting with the Muslim, other Muslim also? This Yeah. is something's wrong with them. या यू नो व्हाट जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे ईरान एक बहुत ही लिबरल टाइप का कंट्री होता था बैक इन आई थिंक 60s 70s में भी बहुत अच्छे से लोग रहते थे ना कोई जबरदस्ती होती थी क्योंकि जो शाह ऑफ ईरान थे वो बहुत ज्यादा बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड थॉट्स थे वेस्टर्नाइज्ड थॉट का ये मतलब नहीं है कि वो ऐसे नाच रहे थे जिस तरीके से बट देयर वर नाइस पार्टीज होती थी शादियां होती थी जहां पर सब एक साथ होते थे नॉट ऐसा कि मर्द अलग है और फीमेल्स अलग होती थी वैसा भी नहीं होता था नाइसली एवरीथिंग वाज सो नाइस जब तक कि उनको ओवरथ्रो करके उनको एग्जाइल नहीं भेजा गया जब तक ईरान बहुत ही खुले दिमाग का एक कंट्री था एंड सडनली जब खोमैनी आ गया और उसका जब रूल चलने लग गया और जब व्हेन ही स्टार्टेड कि ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से होगा तब से बहुत ही ज्यादा मतलब हर एक महिला को स्पेशली आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिला को एक बहुत ही कैद में रखा गया उनको हिजाब उनके ऊपर मतलब कि कंपलसरी हो गया अगर आप बाहर निकलो तो आपको डंडे पड़ते हैं आपको विप किया जाता है आपको मारा जाता है ओनली बिकॉज यू हैव नॉट वोन हिजाब और ये एक बहुत ही ये एक कंट्री है जिसका मैं बहुत कुछ जानती हूँ मतलब मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मतलब इतने अच्छे लिबरल लोग जो समझते हैं जो पढ़ते हैं जो इतना वो करते हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया एकदम से एक लिबरल सोसाइटी से एकदम एक इस्लामिक सोसाइटी मतलब टू एक्सट्रीम्स मतलब इतना ज्यादा उनके लिए बहुत परेशानी हो गई थी टू ये लेने के लिए हिजाब का मूवमेंट सो आई वुड से वन थिंग आई वुड वांटेड टू आस्क यू यू मस्ट हैव सीन दैट हिटिंग तो वुमेन इज अ कॉमन थिंग ओवर देयर मतलब मारना तो इन लोगों के लिए बहुत कॉमन है चाहे वो महिला हो बोलते बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बकवास की बातें करते रहते हैं कि हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन जहां पर महिला को देखते हैं ये लोग विपिंग करते हैं मारते हैं उनको सो beating is a part of Islamic this beating women they say they respect women a lot
they always say that in Islam we respect women a lot, but when it comes to whatever, if you don't listen to them, you are being whipped, you're being put in jail, you are even on the roads you are like अगर मेरा थंबनेल आपने देखा होगा तो उसमें एक महिला को किस तरीके से एक इंसान मार रहा है, उसी से पता चलता है कि मर्द कभी भी नहीं ये करता है कि वो वुमेन को नहीं मारे। उसका है तो राइट समझते हैं वो लोग कि अगर वुमेन ने कोई भी जरा सी गलती की जो शरिया से अगेंस्ट है, they will be beaten. So how, I mean, what do you think these girls who have come out? I have seen nice videos of girls with curly hair and she's come out like, she doesn't want hair. It's so beautiful, it's so nice. So do you think that this full moment, this movement this movement that has come up, that will is for good, or it's going to again like how it happened last time, it's going to again, because of the Sharia law and because of all the going to jail and getting beaten up and all that, so this is again going to fall down? What do you think? No, I don't think so, because this movement very long time is going. Like now, maybe 10 years or more than 10 years, and we are 43 years. We are fighting because we not accept the young generation more not accept, and Yeah. we have the hard time, because if the Islamic government accept what is our right about hijab, they must accept the other rights, because only we don't have problem with Only a hijab, we don't problem. have Yeah. the rights for you. For example, if you want go out of city or out of country, or your father give to you permission, or your husband, you Yeah. are not free as a human. And Yeah. if you are married, always controlling with the husband, and if you Husband. want divorce, the children for the father, not for the mother. Not the It's mother. very Yeah. cruel side. And we have so many things. If they are accept this part, they must accept other parts. And Yeah. now is very big fight. They every day, when I say to everybody, when you are more scared, you more killing and you more catching the people. When you more scared, now they are very scared, because now last 6 months they catch so many people, and they kill in 1 weeks, 1 month ago I think so, again in 1 weeks 13 or 12 people they killed. Oh, They that's so give the sad. penalty for death. Uh, every day is going more, and I'm thinking they are scared, very scared, and they don't know what they must to do. And this is good side for us, because now is time to continue. This is like Yeah. maybe this Muslim fanatic in my country, maybe the population maybe is 5 million. We have 80 million population, and this Yeah. is the nothing front of the so many people of Persian people. They want live with peace, they want everything. You want live in Iran, everything's illegal. They are coming attack to your house because you have two guests, Oh. because boy Yeah. and girls, if you are make some small party, one boy, two, three girls, they are attack to your house and they catch you and they can take you in the court like criminal. When I was 15 years like criminal first time because of my hijab. Hmm. And this is like the people coming here, they want live. Now the economic is very bad, and Yeah. now the economic bad, you cannot live also, you cannot breathe. It's too much pressure, and too much pressure for women, too Yeah. much. You Too much. cannot believe, when you go outside you cannot trust to your police. The police more dangerous for you. Yeah. This is full stress. या ये कह रही हैं कि जैसे अपने घर में अगर हम एक दो लोगों को बुलाएं, दो लड़कियों को या दो लड़कों को अपने घर पे अगर बुलाएं, एक छोटी सी गेट टुगेदर भी करना बहुत बड़ा
जुर्म है, जो वहां पर नहीं वो लोग करने देते हैं, आपको घर से निकाल के वो लोग लेकर जाते हैं और आपको क्रिमिनल समझते हैं। अगर हमारे घर में कोई आता है, अगर हम किसी को बुलाते हैं चाय पे या खाने पे, तो ये भी अलाउड नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी जाना होता है तो या तो हस्बैंड या तो आपका बेटा या तो आपका पिता होता है, वो कोई ना कोई साथ में चाहिए, आप अकेले कहीं नहीं जा सकती। तो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, इतना ज्यादा कहीं भी जाने के लिए, जैसे महरम कहा जाता है कि कोई ना कोई चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि हर एक छोटी चीज के लिए आपको जेल देखना पड़ता है, और ऊपर से जो पुलिस होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है, वो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पुलिस मॉरल पुलिस होती है, सो कॉल्ड मॉरल मॉरल सिखाने वाली पुलिस, ये हर जगह घूमती रहती है। एंड वो लोग हमेशा टारगेट करते रहते हैं कि कौन सी फीमेल, कौन सी महिला ऐसे जा रही है, कौन सी महिला, तो ये फिर नहीं सोचेंगे कि वो उम्र वाली है या वो छोटी लड़की है, वो ये नहीं देखते, वो सीधा उसको या तो जेल में डाल देंगे या तो उसको मारने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस जगह है रहने के लिए, आई वुड से बहुत ज्यादा ये हो गया। लेकिन ये मूवमेंट आई थिंक अभी अगर शुरू किया है तो इसको आगे लेके जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सरस्वती, दैट इफ दे आर गोइंग टू अगेन स्टॉप this movement, then I don't think so there will be anything positive, because every time they start and then they have to stop because of all that is happening, because of the police, this moral police, that they are always there on the roads, they are everywhere. So what I think is that because of them people are scared also, because they put you in the jail। और जेल जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि लड़कियों को 12-12 13-13 साल की जेल हो जाती है, 1-2 साल की नहीं, 12-13 साल की। और अंदर पुलिस अलग अलग उनका रवैया होता है, वो रेप भी करती हैं, पुलिस को कोई मतलब नहीं है, मतलब बड़े बनते हैं, मॉरल पुलिस बनते हैं, लेकिन जब लड़की मिल जाती है तो इनको फिर वो कुछ याद नहीं रहता है कि मतलब हम मॉरल पुलिस है तो हमारी मोरालिटी कुछ कुछ नहीं होती है। तो ये लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे इतने बंधे हुए हैं सोसाइटी में, दैट what I want to ask you is, last time, if you have seen, you have come after a long time, I remember there was this guy who had cut his wife's neck and he was roaming around with that, thinking that he has done a very big thing। एक लड़का था जिसने एक अपनी बीवी की एक तस्वीर शायद फेसबुक पे उसने डाली थी, तो उस लड़की, वो 17 साल की लड़की थी, उसे एक बच्चा भी था, उस मर्द ने, उस जालिम इंसान ने उस अपनी ही बीवी का गर्दन काट के वो उसके हाथ में वो पूरी जगह घूम रहा था लेके, until he was caught। और आप ये यकीन मानेंगे कि आई थिंक ही गॉट 4 years जेल और समथिंग फॉर like किलिंग। that. हाँ, मतलब इतनी कम सजा दी है, सोचो, अपनी बीवी का गला काट के वो घूम रहा है। he was like patrol, he had taken the head of the wife, imagine, and he's roaming on the streets and he gets the minimum jail term, whereas if you don't wear a hijab or if there is a girl, they give longer term। I mean, it's so unfair, it's so unfair, isn't it? Yeah, what would you say about They that? put the acid on the face of the girls, and they give the 1 year, 2 years, and now is more going. And all the girls and women in Iran is not safe. Most of the time, it happened. Mostly this acid problem in Isfahan happen. Mostly Okay. news come from there, and the other place also, but mostly time the news come there. And I hope everything's changed, because so many people and so many men in Iran support the woman. It's not, these things happen in very small village with the, with traditional, very traditional, they happen. But in city and some, the people started thinking it's different going. But yes, when they not make the punishment fair, and they can do anything. Again happened last year, I think so, or 6-7 months ago. The father killed the daughter because the Okay. daughter speak with some boy, and Okay, that is like honor killing. 17 16 years old. This is also happen, but they don't give any, because the father have allowed to kill in Muslim rule, kill the children. Daughter. It's what is right, this is you you know. But
I hope, because in Iran nothing happened like the Afghanistan. Because Afghanistan people, I saw so many of the men of the Afghan people. They are very traditional. They are really Muslim. Yeah. Okay, but we are not Muslim. This is one Mm. other issue. Still we are keep our culture for New Year. Our Arabic New Year different day, but we have the New Year in this springtime, and still we keep this New Year. And every year for Chahashambhe Suri, Wednesday night we make the fire, and still we have the so many fight with this celebration and culture. But this is going different. They are thinking our government going this way, like they make the like Taliban in our country, but it's not going to happen. They are Yeah. thinking, but it's not going. जिस तरीके से वो बता रही हैं कि एक्चुअली ईरान एक पर्शिया जो था वो एक फायर वर्शिपर्स का वो था एक कंट्री ये है कि यहाँ पर भी सबको कन्वर्ट किया गया वही जिस जोर जबरदस्ती से किया जाता है हर जगह तो ये मेरे फोरफादर्स जैसे इनके फोरफादर्स ये सब आग की पूजा करते थे आग की पूजा फायर पूजा हम सब फायर में बिलीव करते थे एंड वी ऑल आर फायर वर्शिपर्स एक्चुअली देखने जाओ जब तक कि इस्लाम ने आके अपना जो भी उन्होंने कन्वर्ट किया वो सब तो इनका जो सऊदी में जो इनका जो फेस्टिवल होता है न्यू ईयर का ये अलग होता है और ईरान में अलग होता है क्योंकि ये टोटली हम फायर वर्शिपर्स थे हम हमारे घर में फायर 24 घंटे एंसेस्टर्स के मतलब मैं कह रही हूँ कि हमारे जो दादा परदादा उनके वो सब फायर को बिलीव करते थे और बहुत ज्यादा बिलीव करते थे जब तक कि ये इस्लाम हमारे सर पे थोपा नहीं गया तो अभी भी वहां पर अगर कोई चीज ऐसी वो लोग देखते हैं कि फायर वर्शिप हो रहा है कहीं पर कुछ भी तो बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है बहुत ज्यादा तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि ये जबरदस्ती वाला जो इस्लाम का जो कल्ट है जो सबके ऊपर थोपा गया है ये हमारे जो ग्राउंड हमारा जो हम जिसको मानते थे और हम जिसकी पूजा करते थे उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया सिर्फ पारसीज अभी रह गए हैं जो पारसीज अपने आप को कहलाते हैं ये भी पर्शिया से ही आए हुए लोग हैं तो ये लोग अभी उनका फायर टेम्पल होता है और वो लोग वरना हम सब भी एक्चुअली फायर टेम्पल में बिलीव करते थे isn't it we all used to believe in fire before we became Muslims we were made to Yes. believe we were tortured or converted we are converted people we were never Muslims before. We used to worship fire. That was our culture and that was our way of living. And still we have this one. Still they couldn't change. In so many countries they change, but still we are not change our language. We speak Farsi. We are not speak Yes. Arabic, and we have our New Year, and they couldn't change. And always we are fighting with them. But now is going different side again. We have so many times in old time also we have the fight for the because they are attacked to us and they take our country and now 1,300 like like around the 1,400 we are now with the force they make the Persian people as a Muslim. तो ये यही बता रही है कि पहले जिस तरीके से ये लोग हम लोग ये लोग जो भी हैं वो लोग जिस तरीके से फायर को वर्शिप करते थे अभी भी उनका जो न्यू ईयर होता है वो उसी दिन होता है वो लोग ने वो चेंज नहीं किया इन्होंने अपनी भाषा चेंज नहीं की क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज एक्चुअली होती थी पर्शिया में जो बहुत पहले से एंसेस्टर वो एक लैंग्वेज इन्होंने बदली नहीं वो सबसे अच्छे किया कि अभी तक दे आर स्टिल टॉकिंग इन पर्शिया और पर्शियन लैंग्वेज को ही यूज करते हैं इन्होंने अपनी कोई अरबिक लैंग्वेज या कोई दूसरी लैंग्वेज इन्होंने आने नहीं दी उसके लिए भी इनको बहुत जद्दोजहद और बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ता है हर चीज के लिए कि हमारे लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने अपना जो न्यू ईयर है वो बदलने नहीं दिया उन्होंने फाइट किया उसके लिए कि हमको न्यू ईयर नहीं बदलना है वी वॉन्ट आवर न्यू ईयर according to our Persian tradition, not according to Islamic tradition or Arabic this. तो at least उतना इन लोगों को अभी तक तो
ये लोग फाइट कर रहे हैं, इसीलिए इनको अभी तक वो रखने दिया है। लेकिन बहुत अजीब सा लगता है कि पूरी कंट्री को तुम इतनी ज्यादा जुल्म करके, महिलाओं पे, स्पेशली वुमेन पे जुल्म करके तुम क्या हासिल करोगे? व्हाट डू यू थिंक इन इस्लाम इज beating a woman for whatever reason? Beating is the first thing they resort to. They want to beat a woman. Is it because of it can be any reason? It can be she's gone out alone. If she's gone out alone, or if she's talking to somebody, kuch bhi hota hai. Just for small reasons they want to put the girls into jail. And what is the actual, you tell me, what is in jail? How are the women treated in jail? औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं जेल में, वो ये बताएंगी। सरस्वती, हाउ डू दे ट्रीट वुमेन इन जेल? This is very bad because I was 40 days. This is very bad. And also they give the some medicine. That time I didn't accept, but medicine to them. And I knew what kind of the medicine. This is psychology medicine, and Oh, is very, I can, very, very bad, very, very bad. So many things happen and nobody can understand. yeah. And so many young people in the jail. And Mm-hmm. also, I was young that time, I know. and is very, Were you very 15 crazy. then? Were you 15 years old that time? No, 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 no. 15 No? years old, first time they catch me and they take me to like some a small place like the office place and not jail. And Okay. I called to my father and my father, but after like 10 hours, I was 15 Oh, years, I went back from my art school to home after okay. 10 hours. That's when we I haven't also mobile. uh, After 10 hours they are allowed to me to call to my father and my father come, but after that I must went to court. And when I went to court and they put this, I don't know, chain in my Handcuff, hand. handcuff, yeah. Hmm. You know, 15 years of for hijab is like criminal going. After that, no, after like uh, I passed the 20 years old, and last time they catch me, this 40 days, this is for not for my hijab because of I speak too much. This is other Okay. issue. And if you have the political issue, like this is not political. They say it's political. When you asking your right, this is not political. When I am speak spirituality, this is not political. This is not Yeah. opposite of our government. You cannot speak spirituality there in Iran. If you make class and speak spirituality, they are coming and catch you. And this is very difficult. You cannot speak because everywhere they have some people, Hmm. everywhere. Because you know what's happening now. Before 10 years ago, this like I call them like woman as a revolution army. Now they have so many. Before they don't have. And they make the people poor. When you don't have any chance, they are going to, to connect with them for the money. And now is in Iran happen because I saw so many people. And but they are not, we are 80 million, maybe 5 million, like that. The other people still are fighting. Even if they are poor, they are fighting because we have some other belief. They are thinking what's happening to them, why they are out of Iran, the people living like that and we are living like that, why we don't have the right. Right. And so many women in Iran, they don't have right, and of course they are standing. Why they are not standing? They have child, they have, they are divorced. If you are in my country divorced, you have so many problem also because you are divorced woman, and they are, like traditional people or fanatic people, they are watching you in other way. Is Hmm. Hmm. again the other problem, like society problem, because we have now other issue. 43 years they are from school, they are training,
the people to change the mind, like Islamic mind. Somehow the effect to our society, but still we have this talent to change everything because our woman, and also one point before, few years ago, so many times we make the some activity and they catch and they kill and we are stop again, we going slow and again, but now it's happened for the teenage people. Yeah. Is teenage not only girls, boys and girls together, and make the when this video, you are shocked. You can say in fashion park, you went to fashion park because they are full power fashion and very nice, very nice. No hijab with full fashion is different fashion, little bit, the dark fashion. Now the young generation going to like the is somehow, I don't know is good or bad, I'm not judge, but they are going to like the I don't know what is called in English, like devil religion. I don't know the pagan religion, something like that. And I don't know this is good or bad, but it's totally they are showing opposite. You are Muslim, you believe God, we are believe devil. This is this is totally opposite, and they cannot do with the young people. In Kingdom also, I researching about the how the revolution happened. From the when the from a school started, high school, they are finished. Because this is our country have the young generation, so many. We are Yeah. not old country. And now I don't know, this is for me hope because I'm researching about so many revolutions, so many in different place. But when reach this stage, a stage of the young generation is going, we are very close to freedom. Yeah. Yeah. Don't know how long, but we are close. योर क्लोज या क्योंकि इनके कंट्री में बहुत सारे यंग हैं जो अब लड़के भी अब रेवोल्यूशन करने लग गए हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें इतना ज्यादा सख्ती ये सब नहीं चाहिए। तो अगर लड़के भी जब ज्वाइन हो जाते हैं तब कुछ बात बनती है, क्योंकि सिर्फ विमेन जब कोई रेवोल्यूशन या कोई मूवमेंट चलाती है तो बहुत आसान होता है इनको उनका मुंह बंद करना, उनको जेलों में डालना। और अब ये जब 15 साल की थी इनको तब भी जेल में डाला गया था, बहुत छोटी थी तभी, और उनके पिताजी ने आके उनको लेके गए थे। और वो बता रही है कैसे उनको कोर्ट में हैंडकफ करके, जैसे एक 15 साल की लड़की को हैंडकफ करके लेके जाओ तो कैसे लगता होगा। और जब ये 20 साल की हुई तभी फिर इसको हिजाब के लिए वापस से अंदर, मतलब कोई भी रीजन चाहिए कि एक जो महिला है, एक जो लड़की है, वो फ्रीडम मांग ही नहीं सकती उस कंट्री में, फ्रीडम की बात सोच भी नहीं सकती, मांगने की दूर बात है, फ्रीडम सोच भी नहीं सकती। तो ये पूरा जो इस्लामिक लॉ जो इन्होंने बना के रखा है ना, मुझे लगता है कि बहुत लोग वहां पर ये भी अब कहने लग गए हैं कि हमें अपने तरीके से हमारे जो फोर फादर्स का जो रिलीजन था वो हमें वो करना है, हमें वो हम उसको मानना चाहते हैं, ना कि आपके इस्लामिक लॉ को। और सही बात है, इस्लाम तो थोपा जाता है, वो कोई दूसरे दूर दूर के कंट्री में सिवाय सऊदी में या फिर आप कहो उन सब देशों में, उसके अलावा जहां भी ये बने हैं, इराक, ईरान, हर जगह ये सारे लोगों को जबरदस्ती बनाया गया होगा। जो भी इस्लाम कबूल करवाया होगा वो कोई आसानी से, और ये लोगों ने भी आसानी से अपना जो ट्रेडिशन है वो दिया नहीं होगा, इनको जबरदस्ती किया गया है। ये एक बात हमेशा याद रखना कि ये चीज जो होती है ना, तलवार पे जो चलती है ना, वो यही हाल है कि हम इस्लामिक लॉ बिलीव करेंगे और हम इस्लामिक लॉ लाएंगे, जिस तरीके से इंडिया में हो रहा है अभी। नाउ इट्स हैपनिंग इन इंडिया आल्सो दैट पीपल आर वांटिंग टू हैव इस्लामिक शरिया लॉ इन इंडिया। यू आर स्टेइंग हियर, you know this, that these people are fighting and they are doing so many stupid things, and so many things have come out now where these people are making plans to turn India into a Ghazwa Hind, that is to capture India and make it an Islamic nation. That is what they have been dreaming about all the time. And there are many people who have, I mean, we caught many people in the full process where we have come to know that these people want Islamic law and they are fighting for it, you know, slowly inside. We don't even know them.
We don't even know who is the, like, there are few people who are caught, but there's a big network which we are not even aware of. And the links are I mean, links are everywhere. If you go to see the funding that is happening from out and everything. So, I mean, this is the only country that is left as, like, as we are idol worshippers or whatever we are. We are Sanatanis, we are idol worshippers, whatever they call us. But they just don't want that thing here also. You must have heard a lot. I mean, if you are watching news, or if you know, there are a lot of things happening in India. Are you aware of it? Yes, I say to all my Indian friends, you are very lucky country because you are secular. Your institution as a democracy, and you are secular, you don't have any rule from your religion come to your rule of your society. It's different, religion different, the politic is different, okay? And politic also always dirty. If you say religion is clean, you must keep the clean. This is way of the spiritual things, not political things. Yeah. And I tell to everybody, and I know this happening is not good. I i hope, because I don't know, because India have so much population, and I hope all my Indian friends are speaking with together, and they know exactly. They know the what is rule of Muslim, and they Mm, know if something's happen in India, is mm, going like is same happen to Iran and other Muslim country. Is not yeah. different, and it's too hard. And all the world they are Mm, trying, but you must aware the people what's happening. Because of that, I'm saying, you see, I'm from Muslim country, and I'm grow up with craziness. I came to yes. India to make healing myself from Yeah. psychology healing, not only physical. This is psychology. From the school they make you crazy, and it's very important all Indian people knows this is Muslim rule is like, is any religion if come to politics is going worse, very worse, because the Yes. before 1000 in Renaissance time, I think so 1500, I don't know exactly the timing. This is same the church and government, and how many people die Yeah. that time, Yeah. so Yeah. Yeah. many people they kill. And now is Muslim happen, and this Muslim, I say to everybody, this head of this snake, we have this Muslim snake, we have so many head, and the Mhm. main head in Iran, if you cut the Iran, everywhere going to come down, because Yeah. Iran give to them food. Because Iran very rich. Now the people poor, but we are rich. They give to four country money to make them survive. Four country, they send everything to four countries. Too much means we are very rich, and they Yes. give to terrorists money and supporting, and this is going, if the Iran finish, all the around the Middle East and everywhere is going down. Yeah. Because before the Khomeini come, all the Middle East in peace. If you go to see the Afghan country, the picture before the our revolution, everybody like the without hijab, and everybody, this is normal. And Lebanon everywhere. And now is fight everywhere. Fight. Syria is like the destroy. Syria is they have the most culture of the world there. Yeah. Not only Middle East, the old age there. Destroy, all destroy. Yeah. And if they cut the head, they cut the Iran, everything is going. And I say to everybody, because this is main place they give to all the terrorists around here, the Iranian government, and they Yeah. send everywhere.
या वो यही कह रही हैं कि जिस तरीके से ईरान इज द मेन, मतलब वो कहते हैं ना सांप का जो सर होता है ना उसको कुचलना होता है, और वो सांप का सर है ईरान में, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा फंडिंग, बहुत ही रिच कंट्री थी, नो डाउट अबाउट इट। बहुत आर्टिस्टिक लोग हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं वहां पर, इतना ज्यादा। अगर आप मैं कहीं पर भी बाहर, अगर देश से बाहर भी गई हूँ, मैंने जो भी म्यूजियम में देखा है वहां ईरान का एक एक, आप अगर आर्ट वर्क आप अगर देखोगे, यू विल बी शॉक्ड। इतने इतना आर्टिस्टिक कंट्री था वो, इतना आर्टिस्टिक, इतना कुछ वहां से आर्ट मिला है लोगों को। पर्शिया आर्ट अगर आप देखो तो इतना ज्यादा फेमस था, और इतना ज्यादा खूबसूरत चीज होती थी, उसको तो नष्ट कर ही दिया इन्होंने। इन्होंने अपना जो बहुत रिच कंट्री थी, तो इन्होंने दूसरों को फंडिंग देना शुरू कर दिया, दूसरे बहुत सारे मुल्कों में। तो एक्चुअली मेन ये कह रही हैं कि मेन जो बोलते हैं ना, जो सर है ना जो सांप का, वो वहीं पर है। अगर उसको कुचल देंगे तो लगता है हाफ ऑफ द, जहां पर ये इस्लामिक का जो नौटंकी चलती है ना, ये और कम हो जाएगी। तो ये वही कहना चाहती है कि किस तरीके से एक रिच कंट्री को इतना पुअर बना दिया, बिकॉज दे आर फंडिंग अदर पीपल, दे आर लुकिंग आफ्टर अदर, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो ये सब चीजों में होती है, उनको फंडिंग करना। उससे ये जो यहाँ के जो लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा गरीबी के हालत में आ गए हैं, बहुत काफी लोग बहुत पुअर इसमें आ गए हैं। तो ये गवर्नमेंट है उनकी जो इतनी जबरदस्त, एक तो खुमैनी आके पूरी पूरी ईरान को उसने पलट दिया है, पूरा उसने देश का नाश कर दिया है। और मैं ये उनसे भी जरूर पूछूंगी कि कितने आर्टिस्टिक, हाउ आर्टिस्टिक डू यू थिंक ईरानी पीपल वर, सरस्वती? You know, in Iran, the people in Shiraz, your city, the before our kingdom, the like the Bombay is artistic place and Delhi is politic place. We have या artistic in Shiraz, and the last place change in Shiraz, and the Shiraz young generation is go out again. You know, we या are artists, and also we have the so much. You know how many talents go out from Iran because our government says you go out. We don't need the intelligent people. This is for so sad about that. Yeah. Yeah. There is somebody who's asking, how is it that ex-Muslim movement in Iran have lot of people left Islam and heard that Zoroastrian movement also picking up? It is true. या जैसे इन्होंने कहा, इट इज ट्रू, बिकॉज हम जोरास्ट्रियन थे, हमको जबरदस्ती बनाया गया, और ईरानी मुस्लिम कहा गया, शिया कहा गया, जो भी मतलब वो है। लेकिन आप यकीन मानो, ये जब कह रही हैं कि आर्टिस्टिक लोग, एंड बिलीव मी दे आर वेरी आर्टिस्टिक, वेरी, मैं कह सकती हूँ क्योंकि मेरे फोरफादर्स बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक थे। वो बात और है कि उनके सर के ऊपर जो भूत चढ़ गया इस्लाम का, वो अलग बात है, लेकिन बहुत आर्टिस्टिक। मिरर वर्क, आप कोई भी वर्क देखो, इतनी खूबसूरती से ये लोग करते थे, दे वर वेरी आर्टिस्टिक। मतलब अब तो आर्ट का ए भी नहीं रहा होगा वहां पर। लेकिन शिराज एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत आर्टिस्टिक लोग रहते थे, बहुत ज्यादा। तो यही है कि अब लोगों को लगता है कि हमारे पहले वाला जो रिलीजन था ना, वही बेटर था। जोरास्ट्रियंस, एज हम ईरानी जो भी थे ईरानी लोग, तो वो कहते कि हम जोरास्ट्रियंस ही बेटर थे। ये जितना ये इस्लामिक आके इनको जो सफोकेट कर रहा है, इतना इनको मतलब जबरदस्ती का इनके ऊपर हावी बना है ना, तो ये लोग चाहते हैं इससे निजात। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारा जोरास्ट्रियन, जो हमारा पहले का जो हमारा रिलीजन था, फायर वर्शिपिंग, वो वापस आ जाए। तो ऐसा हो जाए तो आई एम लाइक, I'll be very happy if this happens. If again Zoroastrian comes back again, it will be such a relief for everybody, especially for all the people who still want themselves to be You Zoroastrian. know, we don't know what's happened because new generation do not believe anything. I'm happy with this because Yeah, they that is are also open good. their Yeah, mind. This is yeah, good because we need to know what is humanity. It's not important what is your religion. Or you yeah, have humanity, and humanity in the all the religions say is not different. They जी, all speak same. They are not different really. If you yeah. go see only, you see the point. And now in our generation, I think so. This is time of the whole the world. Also, there's so many people around me. Do not believe anything.
They're Yes. they're only They don't believe thinking, it. and they're try to be as a human. They be good people, but Yes. really they don't have any religion. When you're asking, they don't know, because all of these people is like, this, they are researching about the so many religion, and now in the one point, uh, all of them are speaking same, but how they make rule, this Yes. is different. How they are acting is different side. But if you go, because I read the Quran also. In Quran, not right about the hijab is the, you must have hijab. Only who has hijab, who believe Yes. must Yes. It's have a freedom hijab. of But we choice. are not believe. Our people, Hmm. they says we don't have belief. And we Hmm. don't want to put the hijab. And other things, they kill the woman with a stone if the woman cheating the husband. And I'm Yeah. reading the Quran. I didn't read these things. या ये कह रही हैं कि जिस तरीके से हिजाब वहां पर बहुत सारे लोग एथिस्ट हो गए हैं और वो होंगे भी क्योंकि इतना ज्यादा कट्टरपंथी जब आ जाती है ना तो कहीं पर जाकर तुम्हें रिलीजन से नफरत होने लग जाती है वो कोई भी रिलीजन हो बहुत ज्यादा अगर हो तो नफरत तो बहुत सारे वहां पर युवक और युवती हैं युवती सॉरी युवतियां हैं जो नहीं बिलीव करती कोई भी रिलीजन हमें इस्लाम चाहिए ही नहीं हम नहीं है इस्लामिस्ट हम यहाँ बॉर्न हुए हैं और आप जबरदस्ती हम पे हिजाब थोप रहे हो हमें जबरदस्ती का इनके तो आपको पता होगा इस्लाम में तो मारना कैसे होता है इनको स्टोनिंग किया जाता है इनको चौराहे पे एक जगह होती है जहां पर ले जाके इनको पत्थर मार के मारा जाता है इतना कुछ होता है इस इन द नेम ऑफ रिलीजन इन द नेम ऑफ दिस तो वहां के लोग कहते हैं हमको नहीं चाहिए रिलीजन हमको रिलीजन चाहिए ही नहीं तो हम हिजाब भी क्यों पहने जब हम रिलीजन है ही नहीं जो रिलीजियस है और जो मानता है उसको हिजाब पहनाओ हमको क्यों हिजाब पहनना है और यहाँ हमारे इंडिया में देखो किस तरीके से मरे जा रहे हैं हिजाब पहनने के लिए जैसे मतलब बड़ा बहुत बड़ा काम कर लेंगे हिजाब पहन के और उसके लिए एजुकेशन भी छोड़ देते हैं और वहां पर वो कह रहे हैं कि हम एथिस्ट हैं हम किसी भी रिलीजन में नहीं बिलीव करते हैं तो हम क्यों पहने भाई ये तो वही बात हुई ना कि आप जबरदस्ती बुर्खा पहना दो हमको नहीं पहनना है हम बिलीव ही नहीं करते इस्लाम में तो इस तरीके की चीजें बहुत हो रही है वहां पर और ये जो मूवमेंट चालू हुआ है मुझे लगता है ये अभी बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा मेनी पीपल हैव बिकम एथिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द क्रुएलिटी एंड द forcefulness of this Islam. Many people have become atheists. They don't believe in anything, isn't it? Yes. Yeah. So the thing is that only people who believe can wear hijab and people who don't believe in Islam, they should No, get in all the Islam, rights. in Quran, right, believer must have hijab. But Hmm. who not believe is not Yes. forced. Hmm. And we are not believe. Yeah. We says we don't have belief and we don't want. You cannot force me when I'm respect with all the religion and I'm respect with any believing, but Yes. you cannot force your belief to me. This is To be. Yes. not Yes. you take my freedom. We can respect to each other. We don't have any problem. Before Iran live like that, anybody hasn't any problem. Who wants go drinking the alcohol free, and he or she go to some place for dancing some things, and the other people go to like mosque and prayer. We have living together without any problem. You cannot force people how to live. This is like minimum freedom for the human now Yeah. in this society. Yeah. वो ये कह रही हैं कि पहले ऐसा होता था कि जिनको अल्कोहल कंज्यूम करना होता था वो भी करते थे अपने हिसाब से जीते थे और जिनको जाना होता था मस्जिद में वो अपने हिसाब से मस्जिद में जाते थे मतलब एक ऐसी यूनिटी थी वहां पर ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज तुमने शराब पी ली तो तुम हमसे वो हो भाई जो नमाजी है वो नमाज पढ़ने जाए और जो जिसको मॉस्क में जाना है वो मॉस्क में जाए और जिसको अगर पार्टी करनी है या कहीं अपने दोस्तों के साथ जाना है तो ये इस बात की मनाही नहीं थी फ्रीडम थी
अब तो वो पूरी फ्रीडम ले चुके हैं यंगस्टर्स की, इसीलिए इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए, बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज में चले गए, क्योंकि ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं जिस तरीके से इनके ऊपर सब कुछ थोपा जा रहा है। जी, before ending the stream, what would you say, Saraswati, that what do you think, like, that you are hoping for a new Iran, that you want to go back to a Iran where there is a lot of freedom, there is a different, there is no Islamic Sharia law. I mean, it has to be that way to, survive over there. What do you? We want to make the democracy like the other country, because democracy now last one is answer. Also, democracy also somehow is going to end. I don't know what's happening there. This is so confusing. But we don't want dictatorship. We Yeah. want some things that all the people living together without any problem with good constitution. And we have the good country. We had the good constitution. In the Zarathustra time, we have in Germany, they put in human rights, our writing from our kingdom, very long time, the Kurosh time, and they are using for human right. And we have the good constitution, and we can make good constitution, and we need the good constitution, and we don't need the dictatorship, because before also we have very nice kingdom, but Yeah. we don't have the freedom for political things. That's Yeah. our kingdom. This is also big problem. Yeah. Big And one. after that, this going like that. We need freedom, and we need the good constitution. We don't need we sure we won't be secular. We don't need any religion come to our constitution rule. Any religion, Yes. Yes. because Yes. this is important. This is different side. And we won 43 years ago, we won this one. But the some things happened, and Khomeini took the power, and we don't know how, and they killed so many people. And now 43 years, we are make ready for again changing for democracy. We don't need the leader. Yes. We Yes. need all the people decide about own country. All the Yes. people with any religion, any belief, anything. We need, but 43 years they make the like we need the repairing. If of course if Iran freedom will be freedom hopefully, and I go back in Iran and to help to young generation, because they hurt them too much. Psychology hurt them. This is Yeah. not easy lifted. Always they are make you first, but they are devil side. Sometimes they are blind to some point. In Hmm. my school, always they make us scary. What's Yes. happened? Two group happen. One group rebel group happen, always fighting, and one group scary people. Hmm. And these rebel people now grow up. And now mostly of the young generation rebel. Before we are 50-50, and now Now, yeah. 90% yes, they are rebel. Yes. They don't scare from anything because they make them like that. When Yes. you have so much stress, when you have always in the scare, make you like that. This is like Yeah. natural. You're Yeah. going to like you once defend yourself. You must survive here. This is Yes. going, but they didn't think about that also. Israel like yours. या ये वही बता रही है कि वहां पर ऐसे होता था कि इनको स्कूल से ही इतना स्ट्रेस और इतना डर दिया जाता था, इनके दिमागों में, इनके दिल में इतना ज्यादा डर बिठा दिया जाता था कि ये बेचारी, मतलब इतने स्ट्रेसफुल लोग हैं वहां पर, इतने साइकोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में, क्योंकि उनको बहुत डराते हैं, बहुत ज्यादा खौफ दिखाते हैं स्कूल्स में और हर जगह। तो 50% होते थे जो रिबेल्स हो जाते थे और 50% होते थे जो बेचारे डर के मारे चुप रहते थे। अब ऐसा हो गया, ये हालात हो गए हैं कि 90% लोग रिबेल कर रहे हैं और वो 10% है जो स्कैर्ड है। तो अब देखो किस
कैसे मतलब ये बदलेगा, क्या होगा? और अगर बदले तो ये कहती मैं वापस जाऊंगी अपनों से छोटे जो जनरेशन है उनके लिए मैं जाऊंगी। इन्होंने योगा सीखा है, ये एक योगा सर्टिफाइड टीचर है, बहुत अच्छा ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं। अगर किसी को इनका योगा क्लास ज्वाइन करना है तो प्लीज मुझे मेल कीजिएगा, मैं इनका नंबर और इनका वो दूंगी आपको, ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस इनका ले सकें। ये बहुत अच्छी योगा टीचर है। इन्होंने योगा ईरान में भी शुरू किया था छुपके से, और फिर उसमें भी इनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि योगा इज हिंदू का वो है, इट इज नॉट अ थिंग, इट्स जस्ट अ हिंदू थिंग। तो वो हिसाब से उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जो इनके पहले वाले एपिसोड में उन्होंने मुझे बताया था। एंड इमेजिन द बेस्ट पार्ट इनका ये है दैट शी इज कम हियर फॉर हीलिंग। आई मीन सोचो, हम अपने कंट्री को कितना ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे यहाँ लोग बाहर से आते हैं हीलिंग करने के लिए, बिकॉज यू हैव कम हियर फॉर हीलिंग। डिड यू फाइंड पीस ओवर हियर, सारा? या Yes, yes, of course, of course, of course. Changed my life. For few years is too much difficult for me because I have a hard time, psychology hard time. But it's work for me. When I came to India, first ashram I went to Osha ashram. After that Mehrabad, and after that I am started. One of my master told me, "It's good you go and practice yoga, and yoga help you more because you need the some yes, peaceful for your body and your mind, because माइंड। that time I have always I have like that, and 3 years I have pain till my back is open, is is really the physical and your mind, everything is damaged from आई नो। your school. They are very dark people. You cannot believe how much they are dark. They are not Muslim really. I say they are not Muslim. Even if you are Muslim, why you are fighting with other Muslim? Why you are killing other Muslim also? This या is they are very not आई you नो। cannot explain इट्स what they वेरी are कॉम्प्लिकेटेड। really. दिस रिलीजन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये आपस में ही मतलब ये चाहते तो हैं कि पूरे दुनिया में कब्जा करें, लेकिन ये आपस में ही लड़ते हैं। ये सभी को पता है। आजकल इंटरनेट में आप क्या नहीं देख सकते हो, सब कुछ पता चल जाता है आप लोगों को भी। लेकिन ये कहती है कि ये हीलिंग जब ये इंडिया में आई है, इनको इतना हीलिंग प्रोसेस इनका हुआ है। इन्होंने योगा सीखा और बहुत अच्छी, जैसे मैंने कहा, ये टीचर भी है योगा की। तो हाउ नाइस के ये जो भी इनका क्लोजर इनको मिला है, जो इतने सालों से इन्होंने जो सहा है ईरान में, वो यहाँ आकर उनको बहुत शांति मिली है, और बहुत अच्छी बात है। इन जैसे बहुत सारे हैं जिनको जो मतलब इनके साथ ही हैं, और बहुत सारे लोग वहां से निकल के आए हैं कि वो वहां नहीं रह सकते। स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि ये खुद ही साइकोलॉजी के एक पेशेंट बन जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे हैं वहां पर जो इस चीज को इतना ज्यादा उनको स्ट्रेस और फियर डाला जाता है कि वो खुद ही और ये 43 इयर्स से हो रहा है। और ये प्रे करती हैं कि ईरान एक अच्छा एक डिक्टेट ये जो डिक्टेटर होता है ना, ये पूरी जैसे पाकिस्तान में भी होता है, और जैसे हर जगह मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादातर ये डिक्टेटरशिप होती है ना, इसी से इन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये चाहती है कि हमारे कंट्री जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री बने, सबको राइट हो अपने हिसाब से जीने का। ये वही प्रार्थना करती है, और ये सोचती है कि अगर ऐसा हो जाए ईरान में तो ये वापस लौटेंगी वहां पर, और अपना योगा योगा टीचर बन जाएगी वहां पर। आई थिंक, isn't it? You are a certified yoga teacher. I said, if you Yes. yes, if you go back, if everything is okay in Iran, you'll go back and open a big school of yoga. I think that is the Yes, best thing. before 3 years, I had the yoga class in Iran, I and it's it's I saw how much I can help, because hmm, yoga is like you practice with your mind and physical, and I know how much they help the people, because all the women in Iran have so much suffering, so many yeah, problems, yeah, and this one is help to them. I knew that 3 years I yeah, had, and I see the result, and I knew happen. And I, yes, of course, if because in India so many master of yoga master, and Lord, in Iran they don't have the this opportunity so much. And if hmm, they make freedom, of course I'm going to help people and young generation, and even in my generation so much hurt, and they need some peace in yes, 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 inside yourself.
And of course I go because 43 years they are destroy all the society, Yeah. all the Yeah. so many things, and now we need so many people like me out of Iran. And Yes. everybody now we are waiting for freedom very long time, and we everybody come back, and mostly intelligent people and good people run because they Yeah. make them run. Yes. We are not run, but they make us to run somehow. Actually. And Yeah. everybody, I think, so come back in Iran to Yeah. make the Iran again like the before and better than before. And we are, this is very different stage of the, mind and consciousness, because people now hold the world. It's not only Iranian people hold the world. The level of consciousness of people is change after this corona happened and so many things happen. Is Yeah. changing. We have the big changing in whole the world. I don't know what's happening, but I knew that I'm feeling that this. So that is very good, and I only hope and pray that one day I mean, country will get freedom, and I only pray for that, because I think it's too much of too many years where people have suffered for nothing, suffered for a religion, suffered for everything, and especially women have suffered a lot. And I think somewhere this has to come to an end. When it goes up, Yeah. it has to come down, and I only pray Yes. that it does come down. Yeah. Thank you so much, Saraswati. Thank Thanks a you. lot. Thanks a Thank lot you for so joining. much, and thank you for support us, and you help Yes, to us, because we need our voice, the other people out of the Iran here, because our government has the voice out of the Iran yeah, always, yeah. and you help us so much, and we are thank you from you. And Thank I you. hope I have the hope for freedom for our country, and peace for love and peace for whole the world. Yes, thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. तो आज हमने सरस्वती, उनका नाम सारा था लेकिन उन्होंने सरस्वती रखा है भी, तो उनसे हमने बातचीत की। और देखो कैसे अपने ही वतन जो होता है ना, जो अपना कंट्री होता है, जहाँ हम पैदा होते हैं और जहाँ हम मरते हैं या जीते हैं या जो भी है, वो याद तो आता ही होगा उसे भी, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है ईरान, जिसकी हालत जो की है ना इन्होंने, वो बद से बदतर हो गई है। मतलब बता ही नहीं सकते कि एक इतनी खूबसूरत कंट्री को आपने पूरा तरीके से आपने उसको तहस नहस कर दिया है इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो सब लोग जो बाहर आ गए हैं, इनकी वॉइस ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि फिर से वैसे ही हो जाए ईरान जैसे था, ताकि ये अपने कंट्री में लौट सके, क्योंकि ये नहीं लौटते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी निकले हैं, अभी आके इंडिया में हील हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। योगा सीखा उन्होंने, योगा की टीचर बनी। 3 साल पहले जब वो गई थी वहां पर योगा का खोलने के लिए, उनके साथ बहुत ज्यादा उनको खोलने नहीं दिया, यही सोच करके ये यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि ये चाहती है कि लोग योगा से हील हों। जिस तरीके से हमारे यहाँ हम योगा से हील होते हैं, वो भी ये चाहती है कि योगा से लोग हील हों वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी में महिलाएं और पुरुष दोनों भी परेशान हो गए हैं। तो ये जो डिक्टेटरशिप इनका खत्म हो जाए और फिर से ईरान वैसा हो जाए जैसा था, तो नथिंग लाइक इट, यू नो। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेरे व्यूअर्स। आपका बहुत 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 आभार, आप सबका बहुत आभार कि आप ज्वाइन आपने किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये थोड़ा इंग्लिश में था क्योंकि वो बात नहीं कर पाती है हिंदी में इतने बराबर, मतलब फ्लुएंटली नहीं बात कर पाती है, टूटी फूटी हिंदी जानती है, लेकिन वो बहुत खुश है इंडिया में। ये खाली सोच करके वो बहुत खुश है इंडिया में, मुझे खुशी होती है कि उसको कितना कितना उसको हीलिंग हुआ है हमारे कंट्री में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबको मैं एक और आज एक चीज बताना चाहती हूँ। मैं साउथ इंडिया में हूँ, और साउथ इंडिया में मैं ऐसे ही कहीं जा रही थी, और मैंने इतने सारे भगवान के जो तस्वीरें हैं, मैंने ट्विटर पे भी डाला है, अपने पोस्ट पर भी डाला है, कि कैसे फेंक देते हैं यार तुम लोग ऐसे तस्वीरें। एटलीस्ट दरिया में जाके बहा दो, उसको कुछ तो रिस्पेक्ट दो। गणपति के, लक्ष्मी जी के, राम जी के, इतने सारे एक पूरा पूरा एक लेन के अंदर ऐसे फेंके हुए हैं।
आई मीन मैं देखकर मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं के फोटोज ऐसे ही फेंक देते हो, कम से कम उसको 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 पानी में डाल दो, या फिर उसको ऐसे कैसे आप फेंक सकते हो कचरे के साथ, कचरा है मतलब रोड के साइड पर। और मुझे ये देखकर सही में बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या देवी देवताओं के आप लोग वो करते हो, क्या इज्जत करते हो ऐसे फेंकने के लिए कचरे में। इतने सारे, आप जाके मेरे पोस्ट में देखना, आपको दिखेगा कि कैसे एक रास्ते के किनारे पे सारे भगवान की तस्वीरें पड़ी हुई है। अब यहाँ पर मुझे किसी को या तो लेके जाके वो पूरे उठा के कहीं पर, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन जब मैं ये देखा मैंने, मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि हाउ कैन दे डू लाइक दिस, मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ। एनीवे, अगर आपकी कोई ऐसी तस्वीरें होती है जो भगवान की होती है, जो आपको दूसरा अगर कुछ लाना है और वो नहीं, तो उसको रख दो। इतना पतला सा एक फोटो आपका क्या जाएगा, आपका घर में ज्यादा जगह नहीं है कि एक आप फोटो रख दो, उसको ऐसे फेंक दो आप बाहर। बहुत दिल दुखता है ये सब देखकर। एनीवे, मेरा लेक्चर तो बहुत बड़ा होता है, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत आप लोगों का आभार। और आप सबको कहती हूँ कि कल मैं 4 बजे एक है युवा हैं जो आने वाले हैं, और आप लोग सब जुड़िएगा। हम वो आई थिंक कॉप डिजास्टर के उसमें कुछ है, वो काम करते हैं, और वो हमको बताएंगे कि हिंदुत्व में स्पेशली ये जो अभी कावड़ यात्रा हुई थी, कावड़ यात्रा ही कहते हैं ना जी, तो वहां पर क्या तमाशा हुआ। और हम मतलब हर एक चीज में, कभी देखो तो मटन या जो भी है ये नॉनवेज जाकर कोई उसमें फेंक दो, क्या कहते हैं, मंदिर में डाल दो, या कहीं कावड़ यात्रा हो रही है वहां जाके डाल दो। और ऊपर से एक आदमी तो वो जो लॉरी जो जा रही थी, जो इनको लेके जा रही थी कावड़ियों को, उनके उसके नीचे जाके मर गया। उसने बहुत बड़ी शहीद, वो शहीद हो गया। और अच्छा हुआ कि एक लड़की वहां से वीडियो बना रही थी, तो उसके वीडियो में कैप्चर हुआ, वरना तो पुलिस आकर हमारे हमारे लोगों को अंदर लेके जाती। तो दैट वाज वेरी गुड कि वो लड़की जो छोटी सी थी उसने एक वीडियो बना ली जिसमें वो जानबूझकर जाके मर गया, क्योंकि उसको शहीद होना था, उसको जन्नत जाने की बहुत जल्दी थी, उसको 72 हुरों को मिलने की बहुत 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 लालसा थी, तो वो ऐसा हो गया है। तो ये सब बारे में हम बात करेंगे कल। आपका बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। हम कल फिर मिलेंगे, और मेरा प्लीज पोस्ट देख लिया करें, और नोटिफाई का बटन वो कर दिया करें, ताकि आपको पता चले कि कब मेरा नेक्स्ट स्ट्रीम होने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम जी। और आप सबको बहुत बहुत प्यार, और अभी से कह देती हूँ शुभ रात्रि।